Hello everyone. In this lecture, we are going to see method of variation of parameters for finding solution of higher order linear differential equations with constant coefficients. In previous lectures, we have seen different cases for finding complementary function as well as particular integral. We know that solution of higher order linear differential equation with constant coefficients, it is given by Cs equal to Cf plus Pi, complementary function plus particular integral. So we have seen different cases for finding Ca complementary function. We have seen different cases for finding particular integral, but this is the special case for finding particular integral. Cf, no doubt we will calculate Cf as usual. Cf अभी तक हमने जैसे फाइंड किया वैसे ही फाइंड करना है, but for finding particular integral Pi, here we are going to use method of variation of parameters. So actually it is the main topic number 3 of unit number 1. First topic we have seen complementary function. Second, we have seen different cases for finding particular integral. And this is the main third topic. In particular integral means second topic, there were total 6 cases for finding Pi. Now, method of variation of parameters. In short, we can also call it as VOP, variation of parameters. So procedure for using this method. Step number 1, find CF of given differential equation. So CF as usual, जैसे हम find करते हैं वैसे ही find करना है. There is no difference at all in getting CF. So find CF of given differential equation. Then compare it with CF equal to C1y1 plus C2y2. We have to find the CF as usual. And after that, we have to compare it with CF equal to C1y1 plus C2y2. Now, clearly, this equation contains two constants, C1 and C2. It means that this formula is written for second order differential equation. Second order differential equation means कि d square का term highest रहेगा and there will be only two values of d. तो d के अगर दो values आते हैं तो उसके लिए हमें दो constant चाहिए. That's why यहाँ पे formula में C1 और C2 लिखा है. It means that जो अभी हम यहाँ पे procedure देखने वाले हैं, so this procedure it is applicable for only second order linear differential equation with constant coefficients. Third order के लिए ये procedure applicable नहीं रहेगी. Third order के लिए आपको यहाँ पे एक और थर्ड टर्म ऐड करना होगा प्लस C3y3 एंड रिमेनिंग फॉर्मूलेज जो है वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे. ठीक है. सो वी आर ओनली डीलिंग विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हियर. सो फर्स्ट इट इज द फर्स्ट स्टेप. वी हैव टू फाइंड CF ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कंपेयर इट विद CF इक्वल टू C1y1 plus C2y2 and note down the values of y1 y2. after comparing it with this formula, CF जो हम फाइंड करेंगे उसे इस इक्वेशन से कंपेयर करना है. And after comparing or equating, we have to note down the values of y1 and y2. So what is y1? y1 it is coefficient of C1 and y2 it is coefficient of C2. तो ये दोनों values हमें note करके लिखना है. ये हो गया first step. In second step, we have to find Wronskian as W it is equal to determinant of y1, y2, y1 dash, y2 dash. So this is the formula for finding Wronskian of second order differential equation. W equals to y1, y2, y1 dash, y2 dash. Again, if we are having differential equation of order 3 means d cube अगर present रहता है तो d के 3 values रहेंगे, तो फिर यहाँ पे Wronskian जो है W वो भी determinant यहाँ पे change हो जाएगा. There will be determinant of order 3/3. तो वो completely change हो जाएगा. बस we are only focusing on second order. So for second order differential equation, W it is equal to determinant of y1, y2, y1 dash, y2 dash. And y1 dash, y2 dash are nothing but derivatives. y1 dash it is derivative of y1, y2 dash it is derivative of y2. So we have to substitute here values of y1, y2, take their derivatives and solve the determinant. ये determinant के अंदर y1 का वैल्यू पुट करना है, y2 का वैल्यू पुट करना है. y1 dash मीन्स ऊपर जो y1 का वैल्यू लिखा है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे नीचे लिखना है. y2 dash ऊपर जो y2 का वैल्यू लिखेंगे उसका डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे लिखना है. And after writing all these values, we have to solve this determinant and get the value of W. Step number 3, find values of V1 and V2 as. Now we have to find here values of V1 and V2 as we are introducing some new parameters here. So V1, V2 अब कैसे calculate करना है? तो for them we are having particular formulae. V1 it is given by minus of integration y2 into capital F of x upon W dx.
ये हो गया v1 का वैल्यू। v1 इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन y2 into capital F of x upon w dx, and v2 it is equal to integration y1 into capital F of x upon w dx. What is the difference? ये दोनों फॉर्मूले में जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मिस्टेक होती है, समवेयर टर्म्स चेंज हो सकते हैं व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला, कुछ तो भी दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो एक सिंपल लॉजिक आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट v1 it is negative and v2 it is positive. That is the first thing. Then inside the integration, f of x upon w, f of x upon w, it is common in both. F of x upon w, f of x upon w, it is common in both. v1 और v2 दोनों में common है. So what is changing in the function? So if you are calculating value of v1, then we have to use here y2 inside the integration. v1 अगर फाइंड करना है तो y2 यूज करना है, और v2 अगर फाइंड करना है तो we have to use here y1. अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर. v1 में y1 लेना नहीं है, v2 में y2 लेना नहीं है, अपोजिट नंबर्स लेना है. v1 अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें इंटीग्रेशन के अंदर y2 लेना है, और v2 अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें इंटीग्रेशन के अंदर y1 लेना है. सो दिस इज द चेंज इन v1 एंड v2. फॉर्मूले के अंदर इतना चेंज है, ठीक है. नाउ we have to find the values of v1 and v2 by using these two results. v1 v2 के जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूला यूज करके हमें v1 v2 का वैल्यूज कैलकुलेट करना है. इट मींस दैट कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. v1 के अंदर इंटीग्रेशन आ जाएगा, v2 के अंदर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4, obtain pi by using pi it is equal to v1 into y1 plus v2 into y2. So this is the formula for getting pi by using method of variation of parameters. This is the formula for getting pi by using method of variation of parameters. pi it is given by v1 into y1, v1 into y1 and plus v2 into y2. अब यहाँ पे v1 y1 v2 y2 ये चारों के वैल्यूज पुट कर दो और एडिशन कर लो, यू विल गेट रिक्वायर्ड pi. एंड pi आने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन वो तो हमें पता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय cs इक्वल टू cf प्लस pi. So these are the major steps of variation of parameter. Now we will take a problem based on it. Example number 1, solve by method of variation of parameters d2y by dx square plus a square y equals to sec ax. d2y by dx square plus a square y plus equals to sec ax. Now here it is clearly mentioned that we have to use or we have to solve it by using method of variation of parameters. Means we can solve any problem by using VOP. किसी भी problem को solve कर सकते हो. But as I have shown you the method, in for finding pi we need v1 v2, और v1 v2 find करना है means वहाँ पे हमें integration को solve करना है. So अब ये necessary नहीं है कि हर बार आपका integration easily solve हो जाएगा. That's why we will avoid to solve the integration. जो इसके पहले general method हुआ है, general method for finding pi, again that is also known as method of integration. तो उसमें भी हमें 2 times integration solve करना था. उस टाइम भी मैंने ये आपको बोला था कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ये हमें रेयरली यूज करना है. अगर प्रीवियस जो 5 केसेस हमने देखे हैं पीआई फाइंड करने के, उससे सॉल्व नहीं होता है तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. सिमिलर थिंग इज एप्लीकेबल हियर कि अगर सपोज मेथड मेंशन नहीं है कि इसे वीओपी से ही सॉल्व करना है, तो फिर नो नीड टू सॉल्व इट बाय यूजिंग वीओपी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आगे जाकर इंटीग्रेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा. v1 और v2 दोनों में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. सो अगर सपोज मेंशन किया हुआ नहीं आता है कि विच मेथड वी हैव टू यूज, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग प्रीवियस केसेस. जो पीआई फाइंड करने के हमने 5-6 केसेस देखे, पहले तो उससे ट्राई करेंगे. और अगर सपोज मेथड मेंशन है कि वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग मेथड ऑफ वीओपी, देन फिर तो हमें वीओपी से ही इसे सॉल्व करना है. ठीक है. सो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus a square y equal to sec ax. Now this equation it is in terms of dy by dx, और हमें जो चाहिए इक्वेशन वो ऑपरेटर d के फॉर्मेट में चाहिए. सो यूजिंग ऑपरेटर d it can be written as d square y, d2y by dx square, d2y by dx square it will become capital D square y and plus a square y as it is, sec ax as it is. Now from left hand side we can take y common. लेफ्ट हैंड साइड से y कॉमन लिया तो रिमेनिंग d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू sec ax as it is. Now it is a simplified linear differential equation with constant coefficient.
So its complete solution is given by CS equal to CF plus PI or Y equal to CF plus PI. Both are the same thing. कैसे भी लिखो. Now, its complete solution is given by CS equal to CF plus PI. So first part we will find CF to find complementary function CF. Its auxiliary equation is given by f of d equal to 0. अब यहाँ पे f of d का प्रॉब्लम, f of d का वैल्यू इस प्रॉब्लम के अंदर. So f of d का वैल्यू यहाँ पे है d square plus a square. Operator is here d square plus a square. So f of d equal to 0 means d square plus a square equal to 0. And d square it's a quadratic equation, तो इसके दो रूट्स आने चाहिए. कैल्सी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू सॉल्व इट मैनुअली. तो इस पे से आएगा d square equal to minus a square. D square plus a square equal to 0 means d square equal to minus of a square. So d it is equal to plus minus under root of minus a square. By taking square root, d equal to plus minus square root of minus a square. Now अब ये a square को हम रूट के बाहर ले सकते हैं, माइनस को रूट के बाहर नहीं ले सकते. We can take a square outside of this root. तो a square को अगर रूट के बाहर लिया तो ये सिर्फ a हो जाएगा. Means we will get d equal to plus minus a and into remaining term square root of minus 1. a square बाहर आ गया तो remaining यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस रूट के बाहर नहीं आ सकता. Now square root of minus 1 यहाँ पे आ गया and we know that square root of minus 1 it is nothing but value of I. Imaginary quantity I का value है square root of minus 1. So since root minus 1 it is equal to I, so finally d it is equal to plus minus ai are the roots of this auxiliary equation. d equal to plus minus ai. So roots contain an imaginary term. I यहाँ पे present है, means we have to use formula for imaginary term और complex pair. CF अभी हमें लिखना है तो हमें complex pair वाला formula use करना है, alpha plus minus I beta. So d equal to plus minus ai. Real part यहाँ पे लिखा नहीं है, real part is not present here. So we will consider it as d equal to 0 plus minus ai. And now therefore roots contain a complex pair. Roots contain a complex pair. So CF it is equal to e to the power alpha x in bracket c1 cos beta x plus c2 sin beta x. ये हो गया formula for getting CF. Now we have to substitute here values of alpha and beta. Alpha और beta के values हमें यहाँ पे put करना है. तो what is alpha and what is beta? Alpha means real part. So real part it is 0. So value of alpha it is 0. And beta it is imaginary part. Imaginary part means coefficient of I. The coefficient of I is here a. So beta का value हो जाएगा a. Now substituting these values in the formula, CF it is equal to alpha equal to 0, beta equal to a. So it will become e to the power 0x in bracket c1 cos ax plus c2 sin ax. एक्सपोनेंशियल के अंदर अल्फा का वैल्यू आ गया 0 और cos और sin के अंदर यहाँ पे बीटा का वैल्यू आ गया a. Now we know that e to the power 0 it is 1. So ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है it will be get removed. e to the power 0 it is equal to 1. तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा. Remaining CF equal to c1 cos ax plus c2 sin ax is the simplified CF. ठीक है. So first step अभी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है. कंप्लीट मीन्स एज पर द प्रोसीजर अभी ये फाइनली कंप्लीट भी नहीं हुआ है. वी गॉट CF. CF हमारे पास में आ गया. CF equal to c1 cos ax plus c2 sin ax. After getting CF, now we are going to apply here method of variation of parameter. तो अभी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जो स्टेप है उसको अगर रिकॉल किया तो फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा था कि पहले हमें CF फाइंड करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर इट और इक्वेट इट विद द फार्मूला CF equal to c1y1 plus c2y2 जो हमने प्रोसीजर में लिखा था. So comparing it with CF equal to c1y1 plus c2y2. कंपेयर करके करना क्या है? After comparing it, we have to note down the values of y1 and y2. y1 और y2 के वैल्यूज को हमें नोट करना है. तो what is y1 and what is y2? तो y1 it is coefficient of c1, y2 it is coefficient of c2. So coefficient of c1 it is cos ax means y1 का वैल्यू हो गया cos ax. Coefficient of c2 it is sin ax. It means that y2 का वैल्यू हो गया sin ax. ठीक है. So in this way अभी यहाँ पे जाके फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. We got values of y1 and y2. After that, second step. In second step, step number 2, we have to find Wronskian. W का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है. In step number 2, we have to find the value of Wronskian means W. W का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है. So W it is given by determinant of y1, y2, y1 dash, y2 dash. ये हो गया फॉर्मूला.
formula of W. Now substitute here value of y1 y2 and their derivatives y1 dash and y2 dash. फर्स्ट रो के अंदर y1 y2 के वैल्यू पुट करना है, y1 y2, और सेकंड रो के अंदर y1 डैश मींस ऊपर जो y1 का वैल्यू लिखा है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लिखना है, ऊपर जो y2 का वैल्यू लिखेंगे उसका डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे लिखना है. सो y1 it is cos ax, y2 it is sin ax. नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos ax ये हमें नीचे लिखना है, तो cos ax का डेरिवेटिव माइनस sin ax इनटू अगेन डेरिवेटिव a. cos का डेरिवेटिव माइनस sin, बट एंगल इट इज कंपोजिट, तो cos ax का डेरिवेटिव माइनस sin ax इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज a. सिमिलरली sin ax का डेरिवेटिव cos ax एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ax, इट इज a. सो ये हो गया डेरिवेटिव्स. नाउ अभी ये डिटरमिनेंट जो है 2/2 ऑर्डर का, ये हमें सॉल्व करना है. तो भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स इनसाइड द डिटरमिनेंट. फर्स्ट एलिमेंट माइनस फोर्थ एलिमेंट एंड माइनस सेकंड एलिमेंट इनटू थर्ड एलिमेंट. ठीक है, तो cos इनटू cos it will become cos square ax. I am removing the annotation so that अभी ये क्लियरली आपको विजिबल रहेगा. वी आर सॉल्विंग हियर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2. तो ये टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो cos ax into cos ax it will become cos square ax and into a. तो ये a को हम पहले लिख देंगे, we will write it as a into cos square ax. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद कांस्टेंट लिखना नहीं है, a it is a constant, तो कांस्टेंट को हमेशा हर बार हम पहले लिखते हैं. फंक्शन के किसी भी फंक्शन के पहले लिखना है कांस्टेंट को. सो ये हो गया फर्स्ट टर्म a into cos square x. Then minus second term will be negative, first term positive, second term will be negative. तो माइनस अगर लिया तो अब ये टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो साइन इंटू साइन इट विल बी साइन स्क्वायर ax, बट अगेन इट इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस अभी ये प्लस हो जाएगा. यहाँ पे सेकंड टर्म अभी ये प्लस हो जाएगी, पहले जो माइनस आने वाली थी अभी वो प्लस हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लिखा है. सो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ax एंड इंटू अगेन a. सो a को इट इज अ कांस्टेंट, इसे फिर से पहले लिखना है. इट विल बिकम a इंटू साइन स्क्वायर ax. सो a cos square ax plus a sin square ax. Now we can take a common from here. We can take a common from both terms. दोनों में से a को कॉमन ले सकते हैं. तो remaining terms inside the bracket are cos square ax plus sin square ax. And we know that value of cos square theta plus sin square theta it is equal to 1. तो अब ये जो ब्रैकेट है cos square ax plus sin square ax, its value that is 1. ठीक है, so it means that w equals to a. ये हो गया w का वैल्यू. So second step यहाँ पे complete हो गया. We got the value of Wronskian w. After that step number 3. In step number 3 we have to find values of v1 and v2. अभी हमें v1 और v2 ये दोनों के वैल्यूज फाइंड करना है. So we will start with v1. पहले v1 का फॉर्मूला और v2 का फॉर्मूला. So v1 it is given by minus of integration y2 into capital F of x upon w dx. So it is equal to v1 it is equal to minus of integration y2 into capital F of x upon w dx. अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है? तो for that we required 3 values here. पहले तो न्यूमरेटर के अंदर हमें y2 का वैल्यू चाहिए. y1 y2 ये हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया है. CF पर से y1 y2 हमने फाइंड किया था. उसके बाद कैपिटल F of x यहाँ पे चाहिए. तो कैपिटल F of x it is the function present on right hand side of given differential equation, जो जनरली हम PI में यूज करते हैं. और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर w का वैल्यू चाहिए रॉन्स्कियन, जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया है. लेट्स चेक इट. व्हाट आर द वैल्यूज? Okay, so value of capital F of x is here sec ax. ये हो गया capital F of x. It is sec ax. After that we need y1. So y1 का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है. y1 it is cos ax. ये हो गया वैल्यू ऑफ y1. तो कैपिटल F of x it is sec ax, y1 it is cos ax, और उसके बाद हमें चाहिए w का वैल्यू. सॉरी y2 चाहिए. वी आर फाइंडिंग v1, तो v1 के अंदर हमें y2 चाहिए. y2 it is sin ax. ठीक है, देन वी नीड वैल्यू ऑफ w. तो w का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, इट इज इक्वल टू a. तो ये तीनों वैल्यूज को भी हमें फॉर्मूले में पुट करना है.
So it will become minus as it is. Value of y2, it is sine ax, into capital F of x, it is sec ax, and upon w. Upon w, the value of w, it is a into dx as it is. Now we have to solve this integration. अभी integration हमें solve करना है. So clearly denominator में जो लिखा है 1 upon a, it is completely a constant. We are taking integration with respect to x. Integration with respect to x लेना है means a it is constant, तो a integration के बाहर हो जाएगा. We will get here v1 it is equal to minus 1 by a into integration of sine ax into 1 upon cos ax dx. We sine ax into 1 upon cos ax. So here we are having function sec ax. So we don't have any formula for integration of sine into sec function. Sine into sec function के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो sec function है इसे मैंने 1 upon cos कर दिया. तो sec theta it is 1 upon cos theta means sec ax it is 1 upon cos ax. Now sine ax and into 1 upon cos ax ये हो जाएगा sin upon cos, sin theta upon cos theta, and sin theta upon cos theta it is nothing but tan theta. So it has become now minus 1 upon a as it is into integration of tan ax. Sin theta upon cos theta it is tan theta. So sin ax upon cos ax it is tan ax. अब ये simplified format के अंदर आ गया function. Now we can take its integration. So integration of tan x. Integration of tan x it is log of sec x. So integration of tan ax it is log of mod of sec ax upon a. Minus 1 upon a जो इंटीग्रेशन के बाहर है इससे पहले एज इट इज लिख दिया. ठीक है. Now integration of tan ax it is log of mod of sec ax and upon coefficient of x. So coefficient of x is here a, तो upon में यहाँ पे लिख दिया a. ठीक है. Now अभी फॉर्मूला integration of tan x dx it is log of sec x. बट अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ लिखा नहीं है, अपॉन में 1 आएगा. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a था इसलिए आपको a से डिवाइड करना है. अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना कंपलसरी है आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन. नाउ it will become now minus 1 upon a and into again 1 upon a. It will be minus 1 upon a square and into log of sec ax. ये हो गया value of v1. After that we have to find value of v2. अभी v2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो फॉर दैट फॉर्मूला ऑफ v2. नेक्स्ट v2 it is given by integration of y1 into f of x upon w dx. अभी देखिए v1 जब फाइंड किया था तो v1 के अंदर y2 आया था एंड इट इज नेगेटिव, बट v2 इट इज पॉजिटिव और v2 में हमें यहाँ पे y1 लेना है. ठीक है. सो कैपिटल f of x upon w इट इज कॉमन, तो कैपिटल f of x का वैल्यू sec ax, w का वैल्यू a, तो ये तो यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा, बट y1 का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा. तो y2 का वैल्यू sin ax लिखा है, y1 का जो वैल्यू है इट इज cos ax जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया था. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इट विल बिकम नाउ y1 it is cos ax into capital F of x it is sec ax and upon a as it is dx as it is. Now again 1 upon a it is constant, तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं. We don't have any standard result for integration of cos into sec function, तो फिर से ये जो sec function लिखा है यहाँ पे sec ax, इसे मैंने 1 upon cos ax कर दिया जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे यहाँ पे. Now cos ax and into 1 upon cos ax it will be get cancelled, remaining term will be 1 upon a into integration of 1 dx. cos cos cancel हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर remaining function 1 and integration 1 dx it is nothing but x. So v2 it is equal to 1 upon a into x. So finally simplified value of v2 it is x by a. तो v1 का वैल्यू आ गया, v2 का वैल्यू आ गया. Now we can get pi. तो स्टेप नंबर 4, अभी फोर्थ स्टेप टू फाइंड pi. तो रिक्वायर्ड pi इज गिवन बाय, अभी pi का यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है. इन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर सेपरेट फॉर्मूला फॉर pi. सो pi इट इज गिवन बाय pi इक्वल्स टू v1 into y1 plus v2 into y2. तो अब जो वैल्यूज हमने फाइंड किए वो यहाँ पे पुट करना है. v1 का वैल्यू पुट करना है, v2 का वैल्यू पुट करना है, y1 का वैल्यू पुट करना है, y2 का वैल्यू पुट करना है. सो pi it will become minus 1 upon a square into log of sec ax. Up to here it is the value of v1. Minus 1 upon a square into log of sec ax up to here
It is the value of v1 and into y1, तो y1 का वैल्यू cos ax प्लस v2 into y2, so v2 का वैल्यू x by a एंड y2 का वैल्यू sin ax। ठीक है, तो चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। नाउ अब ऐसे लगता है कि वैल्यूज पुट करने के बाद अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करना है, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर नहीं करना है, कीप इट एज इट इज। इफ यू थिंक दैट यू कैन सिंप्लीफाई फ्यू टर्म्स देन नो डाउट सिंप्लीफाई इट, और अगर ऐसे लगता है कि कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा तो फिर एज इट इज रखा तो भी चलेगा। भी पॉसिबली सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे एक थोड़ा ऐसे हो सकता है कि log of sec ax, log of sec ax को हम log of 1 upon cos ax लिख सकते हैं, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ log a माइनस log b, पर उससे भी log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस log sec a cos ax रिमेनिंग रहेगा। मींस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत जो पॉसिबल यहाँ पे है वो सिर्फ log फंक्शन के अंदर है, अगर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कीप इट एज इट इज। log of sec ax को हम log of 1 upon cos लिख सकते हैं, फिर log a upon b के फॉर्मूले से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज द pi। Step number 5, last step. Final required solution is given by CS equal to CF plus PI. So CS equal to value of complementary function CF, C1 cos AX plus C2 sin AX, and value of PI, it is minus 1 upon A square cos AX into log of sec AX plus X by A into sin AX, which is the required solution of given differential equation. So in this way, we can find solution of differential equations by using method of variation of parameters also. It is completely different method, और ये use कब करना है? If it is mentioned in the problem, then use it. Otherwise, we can solve problems by using previous method itself. ठीक है? So with that, we will stop here. Thank you very much.